Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Now kids, I am back with my session number 4 of subject unit. In today's session number 4, I am going to explain all these 3 questions of chapter number 3, 4, 5 and 6. Right? So now let's begin with chapter number 3, force, work and energy. Question number 1. What is force? Name any 2 forces. Force क्या है और कौन-कौन से force है? A push or a pull acting on an object is called force. Example: gravitational force and frictional force. Right? Number 2. What is work said to be done? Work कैसे? Work खत्म हो जाता है उसको क्यों कैसे बोलते हैं? When we use force on an object and the object moves to a distance, we say that work is done. कोई भी object के ऊपर force करते हैं और work खत्म हो जाता है तब हम बोल सकते हैं work is done. Third, give any 3 examples of simple machines. Here we need to write down 3 examples of simple machines. Simple machines are tools that we use to make our work easier. Example: screw, inclined plane and pulley. 4. What is pulley? What is it used for? Pulley क्या है? Pulley का use क्या है? A pulley is made up of a wheel and rope. It is used for lifting or lowering heavy objects. पुली एक व्हील और रोप से बना होता है जो कोई भी वेट वाली चीज होती है, हैवी ऑब्जेक्ट्स होती है, उसको लिफ्ट करने के लिए या तो फिर उसको लोअर नीचे डालने के लिए या तो फिर लिफ्ट जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. लास्ट वन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी? एनर्जी के मेन सोर्सेज क्या है? द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सन, विंड एंड वाटर. Brief number 1. Describe any 3 simple machines. Here we need to describe 3 simple machines, right? A lever is simply a bar resting on a support. It is usually used to move heavy objects with less efforts. Example: scissors and hammers. A screw looks like a nail with grooves cut into it. It is usually used for holding objects together. A wheel and axle is simply a wheel connected to a rod called the axle. It is used in bicycles, fans, windmills and steering wheels, right? So कौन-कौन से screw है, wheel and axle है और lever. These are the 3 simple machines, right? Then after next, describe how energy from sun, wind and water can be useful to us. सन, वाटर और विंड की एनर्जी हमें किस तरह से यूज में आती है? सन, विंड एंड वाटर आर सम कॉमन सोर्सेज ऑफ वाटर. सम कॉमन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट? वो कॉमन सोर्सेज एनर्जी की सबसे पहले सन. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी. वी गेट सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट. The heat from the sun can be used to heat water and cook food through heaters and solar cookers. Then after wind energy can turn the blades of windmills. These windmills can use to generate electricity. Then after water, the energy that we get from water is called hydroenergy. Dams help in generating huge amount of electricity. Right? Now, chapter number 4, weather. Question number 1. How does the sun cause changes in the weather? Sun किस तरह से weather में change कर देता है? Some of the ways by which the sun causes change in the weather around us are formation of day and night. Day and night change करते हैं sun की वजह से. Formation of seasons, sun की वजह से seasons भी change होती है. Formation of wind, sun की वजह से wind की formation भी change होती है. And effects on water, water के ऊपर बहुत सारे effects आते हैं जैसे कि water cycle, right? Next, mention the directions in which the wind blows in areas along the season. The directions in
which the wind blows in areas along the seaside is number 1 sea breeze and number 2 land breeze. वो दोनों की सी साइड के आजू बाजू में ये सारे चेंजेस आते हैं, ब्रीज होते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रीज एंड अ गेल? ब्रीज और गेल क्या है? ब्रीज इज अ जेंटल विंड, वो बहुत ही सॉफ्ट विंड होती है, व्हाइल गेल इज अ स्ट्रॉन्ग विंड। गेल क्या होती है? स्ट्रॉन्ग विंड होती है, राइट। देन आफ्टर, व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या है? The process by which water changes into water vapor is called evaporation. Normal water होता है, वो water vapor में change होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? Evaporation, right? Then after, next, how do evaporation and condensation together complete the continuous movement of water between Earth and the atmosphere? The water vapor from lakes, oceans and seas, it then condenses and falls as rain and snow. Thus, evaporation and condensation together complete the continuous movement of water between the earth and the atmosphere. Water cycle जो है वो continuous water में changes लाके हमारे totally weather में changes आ जाते हैं, and it is a continuous process in the atmosphere, right? Done. Now next. Explain how the sun brings about the formation of day and night on the earth with the help of a diagram. I cannot show you diagram, but I can explain you formation of day and night, right? The earth rotates about sorry. The earth rotates about its axis. The earth's rotation causes the formation of day and night. The side of the earth facing the sun has daytime. During the day, the sunlight heats up the air around us. The side of the earth facing away from the sun has nightfall. As the earth rotates and night falls, it becoming cooler. मतलब सन के सामने जो अर्थ फेसिंग आता है वहाँ पे डे होता है, पीछे की साइड नाइट होता है, फिर अगेन चेंज होके जो साइड पे नाइट थी वहाँ पे डे आता है, और जहाँ पे डे होती है वहाँ पे नाइट हो जाती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ सीजन्स आर फॉर्म्ड। सीजन्स किस तरह से फॉर्म होती है? The earth revolves, the earth revolves around the sun in a fixed path called orbit. As the axis of the earth is tilted, different parts of the earth receive different amounts of sunlight. वो revolution करता है, उस वजह से sun की rays होती है different parts में, different अमाउंट में गिरती है, उसके अकॉर्डिंग सीजन चेंज होती है। While revolving around the sun, one of the earth hemisphere is closer to the sun and the other hemisphere is away from the sun. The hemisphere near the sun receives the direct rays of the light from the sun. Therefore, this hemisphere has summer. जिसकी डायरेक्ट रिवॉल्यूशन के टाइम पे सन के सामने जो कोई भी डायरेक्शन आती है, सन के सामने होती है वहाँ पे समर होता है, आजू बाजू में कम रेज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सीजन होती है, राइट। जहाँ पे कम से कम रेज पहुँचते हैं वहाँ पे विंटर होती है। The other hemisphere receives slanting rays of light from the sun. Therefore, this hemisphere has winter. In between the summer and winter seasons, we have autumn and summer season. We have spring. ऑटम और समर सीजन, विंटर और समर सीजन के बीच में ऑटम भी है और स्प्रिंग भी है, जहाँ पे बहुत ही कम रेज पड़ते हैं, मतलब स्लैंटिंग रेज आते हैं, वहाँ पे वो दोनों सीजन हो जाती है। डन। नाउ लास्ट वन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज। हियर वी नीड टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज, राइट। ड्यूरिंग द डे the land becomes hot faster than the sea, so the air above the land heats up faster than the air above the sea. Since the warm air is lighter than the air above the land rises, the cooler and heavier air from the sea rushes over the land. The cooler air from the sea blowing towards the land during the daytime is called sea breeze. The cooler air from the land blowing towards the sea during the night is called land breeze.
Done? Now chapter number 5, solar system. चलो question number 1. Name the 8 planets of the solar system. हम सबको आते हैं. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Done? Next, number 2. Write 2 lines about the following planets. Number 1, Mercury. It is the closest planet to the Sun. It is also the smallest planet. Then after Venus, it is the second planet from the Sun. It is also the hottest planet in the solar system. And after Mars, it is the 4th planet from the Sun. Mars are red in color. Number 4, Jupiter. It is the 5th planet from the Sun. It is the largest planet. Number 5, Saturn. It is the 6th planet. It has ring-like structures around it. Name the 2 types of satellites. How many types of satellites are there? There are 2 types of satellites, right? Number 1, natural satellite, and another one is artificial satellite. Done? Now, next. Describe the planets of the solar system. Here we need to describe all 8 planets of the solar system, right? The planets of the solar system in the order of their distance from the Sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So let's begin with Mercury. Mercury is the smallest planet. It is also called the morning and the evening star. Number 2, Venus. Venus is the hottest planet. Temperature on Venus is very high because of the thick atmosphere. Number 3, Earth. Earth is also called the blue planet because 70% of its surface is covered with water. Number 4, Mars. Mars is called the red planet because soil and rocks found on Mars are red in color. Number 5, Jupiter. Jupiter is the largest planet. Number 6, Saturn. Saturn is the second largest planet. It has ring-like structures around it. Number 7, Uranus. Uranus is bluish in color because of the presence of methane in its atmosphere. Number 8, Neptune. Neptune is the farthest planet. It is also the coolest planet. So we have described all the 8 planets. Now next, last one. How are artificial satellites useful to us? Artificial satellites हमारे use में किस तरह से आते हैं? They are used to study distant planets and other celestial bodies. Number 2, they give us weather reports. Number 3, they are also responsible for the transmission of television, telephone and radio signals. Artificial satellite हमारे बहुत सारे use में आते हैं, जैसे कि सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर हम नज़र भी रख सकते हैं, उसके ऊपर स्टडी भी कर सकते हैं, वो हमें वेदर रिपोर्ट्स भी देते हैं, जो हमारे यहाँ पे रेडियो सिग्नल्स आते हैं, टेलीफोन सिग्नल्स आते हैं, टेलीविजन आते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ट्रांसमिशन है, राइट? लास्ट वन, Mercury completes one revolution around the Sun in 88 days, while Earth takes 365 days. Why? Mercury completes one revolution around the Sun in 88 days while Earth takes 365 days because Mercury is closest to the Sun. कि वो नज़दीक है तो उसको कम स्पेस मतलब यहाँ सोचो कि मुझे जाना है कहाँ पे मुझे टेबल पे जाना है तो मुझे यहाँ से बहुत टाइम लगेगा. अगर कोई वहाँ पे पीछे पंचवटी सोसाइटी में रहता है उनको सिर्फ 3 मिनट्स लगेंगे, मुझे यहाँ पे 20 मिनट्स लगेंगे, राइट? तो वो नज़दीक है, उस वजह से उसकी रिवॉल्यूशन फटाफट खत्म हो जाती है. Done? Now last chapter, chapter number 6, protecting the environment. Question number 1, write 2 ways in which plants are useful to us. Plants कौन-कौन से ways हमारे लिए useful होते हैं? Plants provide us with food and medicines. Number 2, how will saving paper save trees? पेपर को सेव करने से trees को हम कैसे बचाएंगे? A large number of trees are cut down to make paper. Hence, saving paper will also save trees. Number 3,
Write two ways in which animals are useful to us. Animals gives us milk and wool. Why is the World Environment Day celebrated? World Environment Day क्यों celebrate होता है? To save and celebrate the existence of plants and animals on this day. कि यहाँ पे अर्थ में plants और animals exist करते हैं, उस वजह से हम लोग World Environment Day celebrate करते हैं, right? Now next, explain how we should take care of plants to protect our environment. हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्लांट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए? Some ways to take care of plants to protect our environment are: avoid cutting down trees, plant trees in large numbers. ट्रीज को कट करने से बचाना है और लार्ज नंबर में ग्रो भी करवाने हैं, राइट? Then after next, explain how we should take care of animals to protect our environment. हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एनिमल्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए? Some ways to take care of animals to protect our environment are: number 1, avoid using things made from animal parts. Animals parts कोई भी चीज बनती है वो हमें यूज करनी चाहिए नहीं. Number 2, avoid cutting down of trees. हमें ट्रीज को कट होने से भी बचाना है. क्यों? जैसे हमारा घर होता है बिल्कुल उसी तरह से एनिमल्स का भी घर होता है. ट्रीज बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं ट्रीज में, तो वो उससे भी हमें बचाना है. सो किड्स, हियर आई कंप्लीटेड रिवीजन ऑफ अदर 4 चैप्टर्स. सेशन 3 में 4 किए, सेशन 4 में 4 किए, ये तीनों के तीनों तो खत्म हो जाते हैं. अभी ये बच्चा डू एज डायरेक्टेड. डू एज डायरेक्टेड में दीदी ने क्या पूछा है? कुछ भी पूछा है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको वर्कशीट भेजी है ना, वर्कशीट में बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको भेजे, वो तो सारे के सारे करने ही है, बट टेक्स्ट बुक भी रिफर करनी है बिकॉज दिस इज फॉर योर ओनली रेफरेंस. ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के रेफरेंस के लिए है, राइट? तो आपको ये तो करना है, टेक्स्ट बुक के अंदर सब कुछ देखना है. जैसे कि मैं पूछ सकती हूँ लेबल पार्ट्स ऑफ अ लीफ. आपको लेबल करने हैं लीव्स के पार्ट्स, राइट? देन आफ्टर ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. आपको एग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. देन आफ्टर ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ हैन. आपको लाइफ साइकिल भी ड्रॉ करनी है हैन की, राइट? देन आफ्टर ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ लीवर. यू कैन ड्रॉ एनी डायग्राम लाइक सीजर, नाइफ, कोई भी लीवर का हो यू कैन ड्रॉ, ओके? नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ डायग्राम ऑफ पुली. आपको पुली का डायग्राम ड्रॉ करना है, रोप और व्हील लाइक, राइट? देन आफ्टर ड्रॉ वाटर साइकिल. वाटर साइकिल ड्रॉ करनी इजी. सन के रेज वाटर में गिरेंगे, वाटर में से वाटर गर्म होगा तो क्या निकलेगा? इवापोरेशन. इवापोरेशन ऊपर ठंडी होकर क्या फॉर्म करेगी? क्लाउड्स. क्लाउड्स भर के रेनफॉल करेंगे, मतलब प्रेसिपिटेशन, राइट? तो ये आपको ड्रॉ करना है. ड्रॉ एंड लेबल सोलर सिस्टम. ड्रॉ भी करना है और लेबल भी करना है सोलर सिस्टम को, 8 प्लैनेट्स को, राइट? तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड बाय मी इन डू एज डायरेक्टेड. तो आपको क्या करना है? ये वर्कशीट सॉल्व करनी है जो दीदी ने आपको भेजी है. करोगे ना? सॉल्व करोगे ना किड्स? अपने आप ही सॉल्व करना, अपने आप ही चेक करना. मार्क्स फिर मम्मा को बोलना दे दे, राइट? देन आफ्टर मार्क्स देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आया और कितना नहीं. जहाँ पे आपको नीड है वहाँ पे आप CW टेक्स्ट बुक का सहारा लेके आप कुछ भी लर्न कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट? और आपको कुछ और भी नहीं समझ आया, यू कैन मेक अस कॉल, राइट? चलो, सो किड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर रिवीजन आल्सो. चलो, बाय.